Welcome to another lecture. So, in this lecture, we'll discuss joint random variable and marginal density function of the random variable, and we'll discuss independent random variables and moments of random variables and uncorrelated random variables. So, let us define the joint random variable. Consider two random variables x and y defined on the same sample space S. ओके, नोट डाउन। हमने जो x और y जो दो रैंडम वेरिएबल है वो डिफाइन कर रहे हैं सैंपल स्पेस S, क्योंकि रैंडम वेरिएबल का काम क्या है? रैंडम वेरिएबल मैप सैंपल पॉइंट टू ऑन रियल लाइन फॉर रियल रैंडम वेरिएबल्स. ओके, so for the joint distribution function of random variable x y is denoted by capital F of x comma y. Joint density function, a joint distribution function of random variable x and y is denoted by capital F of x comma y, and that will be equal to the probability of joint event capital X less than equal to small x comma capital Y less than equal to small y. So this is definition of joint distribution function for random variable x and y. हमको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हम ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन निकाल सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग. यहाँ पे दो ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन की बात है, तो आई हैव टू डिफरेंशिएट partially with respect to x and y this joint density function. Okay, another relation between this joint density function and distribution function and density function is given by this integration. यदि आपको joint distribution density function पता है, small f of x comma y, so if you integrate this from minus infinity, double integration from minus infinity to x and from minus infinity to y, I will get the joint distribution function, and that will give the probability of this event, this joint event, capital x less than equal to small x, capital Y less than equal to small y. अब जो आपके पास ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन है, सो फ्रॉम ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन वी वांट टू marginal density function of a random variable x and y, that is a density function of x and y. So this joint density function is a complete description of the random variable x and y jointly. Let f of x and f of y be the marginal density function of random variable x and y separate respectively. So how we can get the marginal density function from the joint density function या distribution function. So यदि आपको marginal density function of random variable x can be obtained by partially differentiating, this is relation between PDF and CDF expression. अब क्या है कि if you are writing like this, so this is equivalent to the f ओके. अब इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि यू नो दैट
minus infinity del x del y। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। यदि इस इंटीग्रल को इस साइड इधर कर लेते हैं और इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यदि मान लीजिए कोई फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी टू x g of x dx, if I will partially differentiate I will get g of x। ओके, सो आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये और ये है, तो आपको मिल जाएगा ये चीज जो है इनसाइड, ये वाली चीज यहाँ आपको मिल जाएगी। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द marginal density function of random variable x, you have to integrate this joint density function of xy with respect to y from minus infinity to plus infinity। ओके, यदि x का निकालना है तो ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली marginal density function of random variable y can be obtained from integrating this joint density function with respect to x from minus infinity to plus infinity। So random variable x and y are said to be independent random variable if joint density function f of x comma y is multiplication of marginal density functions। This is marginal density function of x and this is marginal density function of y। यदि x y are independent, then joint density function will be equal to the product of density function of x into y, density function of x and y। तो कभी कभी आपको इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल की पीडीएफ पता है, पूछा जाता है व्हाट इज द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एक्सप्रेशन, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द डेंसिटी फंक्शन ऑफ x and y to get the joint density function। अभी तक हमने बताया था कि रैंडम वेरिएबल को कैरेक्टराइज किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है बाय इट्स पीडीएफ, आइदर इट्स पीडीएफ या सीडीएफ। दिस इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द अबाउट द रैंडम वेरिएबल। जो सीडीएफ और पीडीएफ में जो डिस्क्रिप्शन है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है। ओके, बट समटाइम्स इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू गेट द पीडीएफ एंड सीडीएफ एक्सप्रेशन आल्सो। ओके, सो to get certain description about the random variable or some partial descriptions about random variable, we need moments of random variables। So moments provide a partial description of random variable in terms of few parameters instead of specifying the entire distribution function या density function। जो मोमेंट्स होते हैं रैंडम वेरिएबल के वो पार्शियल डिस्क्रिप्शन होते हैं रैंडम वेरिएबल्स के, दे आर नॉट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। एंड इट इज इजियर टू एस्टिमेट द मोमेंट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम डेटा देन टू एस्टिमेट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। सो वेरियस टाइप ऑफ मोमेंट्स। सो वन मोमेंट इज फर्स्ट मोमेंट या मीन और एवरेज। इसको फर्स्ट मोमेंट भी बोलते हैं, इसको मीन भी बोलते हैं, इसको एवरेज भी बोलते हैं। सो मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x डिनोटेड बाय म्यू सबस्क्रिप्ट कैपिटल X। ओके, दिस इज नोटेशन फॉर द फर्स्ट मोमेंट या मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। x डिफाइंड लाइक दिस, म्यू सबस्क्रिप्ट कैपिटल X इक्वल टू expectation of E is the expectation operator या averaging operator। E of capital X equal to, for a continuous random variable you have to find the first moment you have to integrate या average x into f of x from minus infinity to plus infinity। On the other, for a discrete random variable
you have to sum x into probability of capital X equal to x. Okay, E is the expectation operator. Note down. Always I will write these moments in terms of expectation operator. Okay, जैसे फोरियर ऑपरेटर होता है उसी तरह एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर है. Similar, likewise, a random variable y is a function of another random variable. यदि आपको एक रैंडम वेरिएबल है जो फंक्शन है दूसरे रैंडम वेरिएबल का, यदि उसका मूवमेंट निकालना होगा तो क्या है? यदि एक तो प्रोसीजर होगा कि यदि इफ यू शुड गेट फर्स्ट पीडीएफ ऑफ वाई. ओके ओके, and then use this formula to calculate the PDF of depending upon it is continuous or discrete. You have to calculate the first moment, but we can calculate expectation of a random variable which is a function of another random variable without knowing the PDF of y. We can use the PDF of random variable x. So expectation of y, that is a function of capital X, that will calculated as first expectation of y is a g of f into f of x integrate from minus infinity to plus infinity. In case of discrete random variable, you have to sum g of x into probability of capital X equal to x. Okay, so you, यदि आपको कभी कभी कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आती है, मैंने तो पीडीएफ पता है, so you PDF is a complete description of your random variable, so it will be all information about the random variable. Moment is also a information of a random variable for a random variable. Now we will define nth moment of a random variable, that is a generalized moment. So nth moment of a random variable defined as a expectation of x power n. Okay, so E of x power n. So for continuous random variable case, you have to integrate small x power n f of x with respect to x from minus infinity to plus infinity. For discrete random variable case, you have to sum small x power n into probability of capital X equal to small x. If n is equal to 1, we can get the second moment, first moment. If n is equal to 2, I will get the second moments. So इस फार्मूले में आपको n 2 रखोगे, इसमें I will get this. इस फार्मूले में n is equal to 2 रखोगे तो I will get this second moment, third moment, fourth moment, 10th moment. Sometimes we need these moments to get certain information about the random variable. Now there is another type of moment, nth central moment. Nth central moment of a random variable x is defined as expectation of x minus mu x power n, nth central moment. So expectation of x minus mu x is the first moment, power n, and this is formula for continuous random variable case, and this is formula for the discrete random variable case. Okay, second nth central moment में क्या होता है, रैंडम वेरिएबल को मीन के रिस्पेक्ट में सब्सट्रैक्ट करके उसके बाद मोमेंट निकालते हैं, nth मोमेंट. ओके, दैट इज मीनिंग सेंट्रल मोमेंट. अब क्या होता है कि इसके स्पेशल केसेस हैं. सेकेंड ऑर्डर सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, दैट इज आल्सो नोन एज ए वेरिएंस. वेरिएंस इज ए central moment and it's measure of dispersion of random variable about the mean.
इसे दिस इज गॉसियन रैंडम वेरिएबल, उसका मीन ये है, म्यू है। जो डिस्पर्शन है इस मीन के, मतलब ये कैसे ग्राफ फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है, दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ओके, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन देता है, इससे हम कुछ एनालिसिस में यूज करेंगे। ओके, रैंडम वेरिएबल के। सो फॉर्मूला फॉर दिस सेकेंड central moment of x is defined as integration of, for continuous random variable, integration of x minus mu x is square of x minus mu x into f of x, integrate from minus infinity to plus infinity. Similarly, for discrete random variable case, I have to sum square of x minus mu x into p of x, capital X equal to small x, and sigma x is called standard deviation. आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। सो सिग्मा एक्स इज ए स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और इसीलिए वेरिएंस को सिग्मा एक्स स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड मोमेंट। अब क्या होगा कि सेकेंड सेंट्रल मोमेंट और फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट, सेकेंड सेंट्रल सॉरी, आप जो वेरिएंस है उसको इस यदि आपने पहले से ही सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, सेकेंड मोमेंट एंड फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट कर रखा है, तो इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करके देखोगे, वी कैन कैलकुलेट बाई दिस with second second moment minus square of mu x first moment. Mu x is the first moment of random variable. यदि आपको कैलकुलेट करने को, एक तो इंटीग्रल आप सॉल्व कर लीजिए, या आपने पहले से आपने सेकेंड मोमेंट सॉल्व, इसको थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, ये सॉल्व करना, सेकेंड मोमेंट ऑब्टेन करना इजी है, फर्स्ट मोमेंट करना भी इजी है समटाइम्स केस। यदि ये कभी कभी इस फार्मूले को यूज करने में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब डिफिकल्टी आ जाती है, इंटीग्रेशन बड़ा हो जाता है, सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। तो फर्स्ट यू कैलकुलेट द फर्स्ट सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, एंड देन कैलकुलेट द फर्स्ट मोमेंट, एंड यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन गेट द वेरिएंस या सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। E of capital X minus mu x स्क्वायर। सो पहले इस स्क्वायर को एक्सपेंड कीजिए, आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स एक्स प्लस म्यू एक्स स्क्वायर। ओके, जो होता है एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर इज लीनियर ऑपरेटर लाइक फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो आई विल टेक इनसाइड, I can write expectation of x square minus 2 mu x. Mu x is not random variable. Expectation operator works on random variable. So I will take, this is a scalar constant 2 mu x into expectation of x plus expectation of mu x, तो ये it is a mu x square हो जाएगा। अब क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज म्यू एक्स। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स, एंड दिस विल गिव एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एक्स। तो आप जो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट को, यदि आपके पास सेकेंड नॉन सेंट्रल मोमेंट है और फर्स्ट मोमेंट है, तो आप इस फार्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन में इजी होता है। ओके, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस।
joint expectation. For a two random variable x, y, joint expectation is defined as expectation of x into y that can be calculated by double integration of x into y into joint density function of x and y, and this will be dy. Okay, dx into dy, इसको डबल इंटीग्रेशन करना है x into y into joint density function of x and y. उसी तरह डिस्क्रीट केस में x into y into probability of joint event कैपिटल X equal to small x comma कैपिटल Y equal to small y. इस तरह joint expectation निकाल सकते हैं for joint random variable case. Now another type of random correlated type random variables. So correlation कैसे निकालेंगे? Covariance के हेल्प से correlation निकालते हैं. Correlation means a signal या function try to find itself in another signal. So random variable is also a function. So we can define correlation. Correlation is an operation in which a signal try to find itself in another signal. Okay, similarity find करना चाहता है एक सिग्नल अपने दूसरे सिग्नल के साथ अपनी similarity. So correlation between random variable x and y measured by the covariance, and covariance is defined as expectation of x minus mu x into y minus mu y. और उसी तरह जैसे मैं पहले सिंप्लीफाई किया इसको भी सिंप्लीफाई करके ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस म्यू एक्स इंटू म्यू वाई निकाल सकते हैं कोवेरियंस किसी भी रैंडम वेरिएबल. और उसके बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर टू रैंडम वेरिएबल नॉर्मलाइज कोरिलेशन कोफिशिएंट यू हैव टू डिवाइड covariance of a random variable x y by the product of standard deviation of x and y. और इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हो सिग्मा एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू एक्स वेरिएंस है एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ y माइनस म्यू y. And this is a covariance. Okay, this is joint expectation of x minus mu x into y minus mu y. जो रो है रो डिनोट द कोरिलेशन कोफिशिएंट्स. तो ये नॉर्मलाइज है नॉर्मलाइज कोवेरियंस है. इट मस्ट ऑलवेज लाइज बिटवीन +1 and -1. So absolute value of rho is less than equal to 1. So this imply rho lies between -1 to 0. और ये कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर करता है हाउ टू रैंडम वेरिएबल आर सिमिलर या डिसिमिलर. इफ सिग्मा इक्वल टू +1 एक्स वाई आर मैक्सिमली पॉजिटिवली कोरिलेटेड बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है फुल्ली कोरिलेटेड. वाइल सिग्मा इक्वल टू -1 दे आर मैक्सिमली निगेटिवली कोरिलेटेड डिसिमिलर है कंप्लीटली. इफ सिग्मा इज 0 वेरिएबल आर अनकोरिलेटेड उनमें कोई कोरिलेशन है कोई सिमिलरिटी नहीं. एक तरह से कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ सिमिलरिटी. सिमिलरिटी को मेजर करने का एक मेजर है. It is common practice to consider random variable to be uncorrelated for practical purposes if the magnitude of correlation coefficient is below some threshold. यदि कुछ थ्रेशोल्ड से कम होता है उसको मानते हैं कि अनकोरिलेटेड है. और प्रैक्टिकल केसेस में हम चाहते हैं कि these random variables should be uncorrelated. ये कहना चाहते हैं हम. So uncorrelated random variable की definition क्या है? If random variable x y uncorrelated if covariance is 0. क्योंकि रो इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. रो 0 होता है तो कोवेरियंस भी 0 होगा. कब 0 होगा रो? जब कोवेरियंस 0 होगा.
So this is another definition of uncorrelated random variable. Rho 0 है या covariance 0. There are some statements. Two random variable may be dependent, but still dependent हो सकते हैं, but may be uncorrelated. If there exists correlation between two random variables, one may be represented as linear regression of the another random variable. The correlation is linear regression से दूसरे मतलब if there exists correlation between two random variables, if they are dependent, so one may be represented linear regression of other. Okay, or independence implies uncorrelatedness, but uncorrelated generally doesn't imply independence. I will explain. Covariance between x and y is written as joint expectation of xy minus mu x into mu y. यदि random variable x and y are independent, then I can write joint expectation is a multiplication of expectation of x into y. If x and y are independent. Okay, so this will be expectation of x is mu x, expectation of y denoted by mu y minus mu x and mu y. तो जीरो है. इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो वो अनकोरिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, ये नहीं हो सकता. मतलब इन जनरल केस में नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर ज्वाइंट गॉसियन रैंडम वेरिएबल केस में. बट अनकोरिलेटेड रिलेटेड जनरली डजंट इंप्लाई इंडिपेंडेंस. लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल अनकोरिलेटेड है तो इंडिपेंडेंट भी होंगे, लेकिन ये जनरलाइज नहीं है. बट यदि इंडिपेंडेंट हैं तो वो अनकोरिलेटेड हैं. ओके, इसका प्रूफ ये दिया था. जो ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड वाई, if x and y are independent, it will equal to the product of expectation of x into y. ये लेक्चर फिनिश हो गया.